Hello everyone. I'm going to start my video series of past 2 days. It will be covering what majorly happened all around the world in the past 2 days. It is a no news analysis channel and it will be covering the important headlines, whatever happened in the past 2 days, and maximum the video will be about 10 to 15 minutes. Now let's sneak peek into what's major. Japan's Prime Minister visit to India. It was a 3 day official visit of Sanae Takaichi, just marking the Indian Japan Annual Summit, initiated their first ever joint military project to co-produce the Unicorn Unified Complex Radio Antenna Naval. It is a naval antenna system. It's secured for 1.05 lakh crore in fresh Japanese investments for major infrastructure, automotive, and industrial projects. Right, combines the India AI mission with Japan's GENIAC initiative to co-develop localized large language models, launched a massive energy initiative to construct 1000 biogas and organic fertilizer plants across India, adopted on economic security declaration to reduce over dependence on single source suppliers for semiconductors and critical minerals. 2027 has been designated as the India Japan Year of Shared Horizons to mark their 75th diplomatic anniversary. So, second news is Gagan strengthens India's aviation navigation with indigenous satellite technology. अब हमारे पास दो सिस्टम हैं, एक है गगन, एक है नाविक। जो इसरो गगन जो है वो इसरो हैज़ बिल्ट इट with Airports Authority of India. Gagan's full form is GPS aided geo augmented navigation. It is a satellite based augmented system. It corrects GPS signals to deliver pinpoint accuracy, allow aircraft landing safely in poor weather or at airport lacking ground based equipment. Also used for disaster management, railway signaling, marine navigation, vehicle tracking. बेसिकली गगन जो है एक तरीके का सिस्टम है जो कि एविएशन सेक्टर को हेल्प करता है। जैसे जो प्लेन्स हैं टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, तो उनको एक प्रॉपर एक्यूरेट लोकेशन की ज़रूरत है लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए, पूरे उसके लिए। तो ये गगन सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट करता है, इंडिया में एविएशन सेक्टर को सपोर्ट करता है। वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे यूएसए का अपना है, यूरोप का अपना है, चाइना का अपना सिस्टम है। इसी प्रकार से जो नाविक है, नेविगेशन विद इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये जो लॉन्च किया गया, ये जो एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि लॉन्च इसरो ने ही किया है, और इसको इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहते हैं। इंडियन रीजनल ही हम क्यों यूज़ करें, जैसे हम जीपीएस हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। तो जो जीपीएस है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, वो ग्लोबली यूज़ किया जाता है। पर हमने अपने देश के लिए जो रीजनल लेवल पे जो बिल्डअप किया है वो नाविक सिस्टम है। It provides primary coverage over the Indian mainland region extending up to 1500 kilometers around the country borders. Provides highly accurate position and navigation and timing. It operates on dual frequency band which allows it to independently assess atmospheric delays, making it technically more accurate. और इसका जो फीचर है, सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये इंडियन मेनलैंड के लिए है, ये ग्लोबली फंक्शन नहीं करता है। But what are the other headlines? India has strongly condemned the reported demolition of the historic 125 years old Gurdwara Sri Guru Singh Sahib in Farooqabad, Pakistan. India External Affairs Ministry has labeled the destruction a largely deplorable and targeted act of vandalism against a revered Sikh shrine. Indirect US Iran talks held in Doha, Qatar concluded. Mediated by Qatar and Pakistan, both sides agreed to resume negotiations after July 9
because the funeral processions for Iran's late supreme leader Khamenei is going on. 2000 firefighters were battling several wildfires along France's Mediterranean coast as the region grappled with parched conditions following Europe's recent heat wave. Amarnath Yatra begins July 3. Lieutenant Governor Manoj Sinha flags of first batch from Jammu. जो गीता प्रेस है उसने सबसे सबसे फर्स्ट टाइम इट हैज लॉन्च्ड भगवत गीता इन 3 लैंग्वेजेस संस्कृत हिंदी एंड इंग्लिश इन सिंगल वॉल्यूम फॉर ग्लोबल रीडर्स. इसराइल और यूएस के बीच में लैंड एग्रीमेंट फॉर परमानेंट अमेरिकन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन जेरूसलम साइन हुआ है. ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा वेनेजुला में बिकॉज ऑफ द devastating earthquake. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, she has visited France. She is on a 4-day visit, or she is inviting French investors to partner with India's journey towards Viksit Bharat 2047. This is all for today. Now I'll be working on this with time. Thank you.